Hello everyone, I am Jagmeet Singh from GHPS Raisanagar. Last video I have taught you about expressing concentration of solution. Today we will discuss on the topic of Raoult's law. Raoult's law given by Raoult's in 1886. According to this law, the partial vapor pressure of a volatile component above its ideal solution is directly proportional to its mole fraction in solution at the given temperature. According to this law, the partial vapor pressure of a volatile component above its ideal solution is directly proportional to its mole fraction in the solution at the given temperature. According to this law, partial vapor pressure directly proportional mole fraction X. According to this law, partial vapor pressure directly proportional mole fraction X. Now we study a case. We take a liquid solution. जिसमें कि दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकेंड. कंपोनेंट फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर होगा वो P1 और कंपोनेंट सेकेंड का जो वेपर प्रेशर होगा वो P2 होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1 and P2 directly proportional X2. For component first, for component second, P1 directly proportional X1 and for component second P2 directly proportional X2. P1 is equal P1 naught X1 and P2 is equal P2 naught X2, where P1 naught is vapor pressure of pure component first and P2 naught is equal vapor pressure
of pure component second. Now P total is equal P1 plus P2. Putting the value of P1 is equal P1 naught x1 or P2 is equal P2 naught x2, this equation. So P total is equal P1 naught x1 plus P2 naught x2, because we know xa plus xb is equal 1. We change a into 1 and b into 2. So x1 plus x2 is equal 1. So x1 is 1 minus x2 and x2 is 1 minus x. x2 is 1 minus x1. Now we putting the value of x1 here. x1 is equal 1 minus x2. So P total is equal P1 naught 1 minus x2 plus P2 naught x. So multiply this equation. So P total P1 naught minus P1 naught x2 plus P2 naught x2. So P1 naught plus P2 naught x2 minus P1 naught x2. Here x2 is common. x2 is common. So P total is P1 naught plus P2 naught minus P1 naught x2. Now we get a equation P total is equal P1 naught plus P2 naught minus P1 naught x2. We also putting the value of x2 1 minus x 1 minus x1. So we get another equation P total is equal P2 naught plus P1 naught minus P2 naught x. One same condition, P1 change to P2 and x1 x2 change into x1. अब हम इस टॉपिक को दोबारा से देखते हैं. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2 लिक्विड लेते हैं जिसमें कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड है. इसका वेपर प्रेशर P1 होगा और इसका P2. P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 एंड P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2. P0 naught is pure vapor pressure of component first and pure P2 naught is pure vapor pressure of component second. So P total is P1 into P1 plus P2. P1 और P2 की वैल्यू पुट कर देंगे और x1 की वैल्यू अपने यहाँ से निकाल ही लेंगे 1 माइनस x2. इसको मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को ये इक्वेशन प्राप्त होगी लास्ट में.
अगर अपने इसकी जगह x1 की जगह 1 माइनस x2 को इसमें चेंज कर दें, x2 की वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो 1 माइनस x1, अगर अपने इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को अनदर एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, दूसरी एक और, जो होगी अपनी p टोटल p2 नॉट प्लस p1 नॉट माइनस p2 नॉट into x1. The graph of vapor pressure and mole fraction is x1 is 1 or x0 is x2 is 0, x1 is 0 and x2 is 1. Mole fraction presented by xx and vapor pressure presented by yx. So graph is P1, P2, P not 0, P1 not, P is equal P1 plus P2. Thank you.